में आए हैं। हम इंशाल्लाह अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे क्रिकेट खेलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जो ना सिर्फ हमारे फैंस को पसंद आए, यहाँ के लोगों को पसंद आए और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको पसंद आए। हमारा पूरा एम यही है कि हम किस तरीके से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन रिज़ल्ट एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ नहीं होता, लेकिन अगर आपकी जो क्रिकेट खेलने का अंदाज़ है, आपका एटीट्यूड है, आपका एफर्ट है, अगर वो चीज़ें ठीक रहेंगी तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर जाएंगे। और जो लोगों का ओपिनियन है, हर किसी का राइट है अपना ओपिनियन रखने का। मेरा एज अ पर्सन हमेशा मैंने लाइफ में ज़िंदगी में चैलेंजेस लिए हैं। ये एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी है। कोशिश करेंगे इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख के एक अच्छा रिजल्ट हासिल करें। आपकी कैप्टनसी में ये टेस्ट सीरीज़ आप जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि इट्स अ चैलेंज, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जिनको टैकल करना थोड़ा हार्ड होगा पाकिस्तानी करंट जो टाइम जो टीम का स्ट्रक्चर है उसकी? देखिए, उनकी टीम करंट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियंस हैं, तो किसी एक को हमने टारगेट नहीं करना। उनका अगर आप 14 का भी स्क्वाड देखें, एक बहुत अच्छा वेल बैलेंस स्क्वाड है। हमें पता है उनका जो बॉलिंग अटैक है, चाहे वो 4 बॉलर्स खेलें, 5 बॉलर्स खेलें, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट किए हैं डिफरेंट कंडीशंस में। उनकी बैटिंग लाइनअप ऐसी है जिन्होंने हर जगह रन्स किए हैं। तो हमारे लिए यही है कि जब तक हम तीनों फैसेट्स में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में हम लोग अपना ब्रांड नहीं अच्छा खेलेंगे तब हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश यही है कि हम लोग क्या ला रहे हैं इस फील्ड के अंदर, हम लोग क्या ला रहे हैं, और मुझे लगता है हमारे पास एक ऐसी साइड है जो इन कंडीशंस में अच्छा खेले। शान भाई, मलिक रियाज शान, आपने कप्तानी आपको मिली है, लेकिन जो क़यादत होती है उसमें भी बंदा ओवरव्यू देखता है, एज अ प्लेयर डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो आपने कहाँ देखा है अभी कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में किन डिपार्टमेंट में काम करने की ज़रूरत है? देखें, आई थिंक हमने एक वो बात की है एज ए टीम के हम कोशिश करेंगे कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक एग्रेसिव माइंडसेट से खेलें। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आएगी दूसरी साइड को प्रेशर में डालने की, हम कोशिश करेंगे कि हम एज अ बॉलिंग यूनिट या बैटिंग यूनिट प्रेशर डालें। टेस्ट क्रिकेट काफ़ी चेंज हो गई है। टाइम फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसमें। एज अ बैटिंग यूनिट आपको कोशिश करनी होगी कि जो रन्स की थोड़ी रफ्तार है वो आप थोड़ी बेहतर करें। एज अ बॉलिंग यूनिट आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 आउट करने होंगे। टेस्ट मैच के कुछ बेसिक्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन बेसिक्स को हम जितना अच्छा करेंगे उतना रिजल्ट हमारे लिए अच्छा होगा। शान, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं और एज ए फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सबका जो चैलेंजिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या फ़र्क किया और क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई? देखें, आपने जब भी अपॉइंटमेंट होती है आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स देखते हैं, फिर आप उस पर बिल्ड करते हैं। जी, ऑपोजिशन को देखना बहुत आसान होता है कि सामने टूअर होता है, सामने टूअर खड़ा हुआ है और आपने ऑपोजिशन को भी देखना, एनालाइज करना है। लेकिन इस वक्त हमारा जो एज ए टीम हमारा जो गोल है, हम किस तरीके से अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं एज ए क्रिकेट प्लेइंग टीम, क्या हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगा, उस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और देखें, ये अर्ली स्टेज है। कोशिश देखें, हमारे लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अपनी स्किल्स जो हैं शुरू से ही हम यहाँ की जो सबसे बेहतरीन टेस्ट टीमों में से उनके ख़िलाफ़ हमें मौका मिल रहा है कि हम वो चीज़ आके उधर शो करने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली इसे स्टेप बाय स्टेप लेंगे, डे बाय डे लेंगे। कल से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच शुरू हो रहा है। आई थिंक वो हमें एक बहुत अच्छी पिक्चर देगा कि हम किधर खड़े हुए हैं एज ए टीम और हमने क्या क्या करना होगा गोइंग फॉरवर्ड। जी शान, मलिक रियाज दुनिया टीवी से। आप भी टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, बाबर भी वन डाउन खेलते हैं, तो वन डाउन कौन आएगा और दूसरा ये विकेट कीपर बल्लेबाज कौन खेलेगा? देखिए, बाबर की टेस्ट में 4th पोजीशन रही है जब से वो खेल रहे हैं। आई मीन जब वो स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली वो 3 पे भी खेले, 3 से लेकर 6 तक खेले, बट आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बाबर सेटल्ड हैं 4 पे। तो उनकी पोजीशन, आपका जो बेस्ट बैट्समैन है, आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी टीम अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाएं। अभी तक जो हमें जो पिक्चर यही नज़र आ रही है कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप भी मैंने आपको बता दी कि इमाम अब्दुल्ला 1.5 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, रन्स कर रहे हैं। तो मुझे एक वो नंबर 3 पोजीशन लगी जिसमें मैंने अज़हर अली को रिप्लेस किया था जब अज़हर भाई रिटायर हुए थे, और ओवर द लास्ट ईयर मैंने सारी क्रिकेट ही नंबर 3 पे खेली है, रेड बॉल क्रिकेट जो है। तो ये आपको शायद थोड़ा सा इसमें इस शक्ल में आपको टीम नज़र आएगी। जहाँ तक आपने विकेट कीपर बैट्समैन की बात की, देखें जो एक लास्ट फुल सीरीज़ हुई थी उसमें श्रीलंका से पहले सरफराज भाई वापस आए, उधर मैन ऑफ द सीरीज़ बने। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में उनको एक टेस्ट के बाद ही उनको कंकशन हुआ।
तो आप कोशिश यही करते हैं कि जो उस फॉर्म में थे, फिर डोमेस्टिक जो अभी क्रिकेट हुई है उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे उसमें, तो अब कोशिश होती है आप उनको गो अहेड दें, उनको मौका दें। वो 2016 में भी जब इधर आए थे उन्होंने रन्स किए थे, रिजी ने भी 2019 में किए थे, लेकिन हमने काफ़ी क्लियर किया, देखें कंडीशंस देखेंगे एंड यू नेवर नो कि शायद इनमें से एक को एज अ बैट्समैन भी खेलना हो, तो वो हम जब कंडीशंस देखेंगे, इस मैच की पोजीशन देखेंगे, टेस्ट मैच खेलने जाएंगे, तभी हम डिसाइड कर सकेंगे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन शान, ऐसा कैप्टन आपकी आज पहली असाइनमेंट है ये, और उसको कैसे देखते हैं? दूसरा ये, कल हमने देखा जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें जो हमारे बॉलर्स थे उनको भरपूर बाउंस की प्रैक्टिस करवाई गई, शाहीन हो, फरम शहजाद हो, आमिर जमाल हो, तो मतलब एक जहन बनाया हुआ आपने, जिस तरह के उनके बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, वो इस तरह बाउंसिंग विकेटों पे मतलब विकेट्स लेते हैं, तो क्या आपका भी जहन इसी तरफ ये कि शाहीन और आमिर जमाल और फरम शहजाद उनको भी इस तरह यूटिलाइज करें? देखें, कैप्टनसी की जहाँ आपने बात की, बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज है। आपको एक मौका मिलता है कि आप डिसाइड करें कि टीम किस तरीके से खेलना चाहती है। आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपको टीम को साथ लेके चलना होता है। इसमें बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सिर्फ अपना आप वो करियर नहीं देख रहे होते, आप बहुत सारे प्लेयर्स का करियर देख रहे होते हैं जो स्क्वाड में हैं, जो स्क्वाड में नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त टैलेंट भरपूर है, बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो आप कोशिश करते हैं कि आप 25 का स्क्वाड रख लें, लेकिन हम नहीं रख सकते, ऑब्वियसली वो रिस्ट्रेंट्स होते हैं, तो काफ़ी आपको आई थिंक एज अ बैट्समैन it was a bit bittersweet, the last Australian tour. I got a couple of starts, but you want to convert those starts in test cricket and obviously get 3 figures where you're getting double figures, so that'll be my test, that'll be my opportunity. We got used to conditions very well. I think Babar got 100, Yasir Shah got 100, but there were a lot of 50s and 50 plus scores from batsmen in the last tour, so we'd want to convert those into bigger scores and make them into match winning contributions. Any idea of opening combinations over this match? Look, like I've said, we've got a settled opening pair over the last year or so, Imam and Abdullah. That's our aim. As far as conditions go, we're a side that also looks at conditions, and if we have to make a couple of decisions regarding conditions, we'll do so for the betterment of the team. Do the fast bowlers, do you think really has the chance to make a mark here in Australia? We've got 6 other guys with Shaheen, each posing a different kind of threat for batsmen. We've got 2 top first-class performers like Mir Hamza, who's a left armour. He's also played some county cricket, played a couple of test matches. We've got Furham Shahzad, who is the highest wicket taker in our domestic season. Then we've got, we thought that we could utilize somebody like Mohammad Wasim Jr., who can add a bit of pace. If the ball does reverse, let's say at the SCG, he'd be quite handy. Amir Jamal's an all-rounder that we're keeping an eye on. He bowls with good pace. Ham is a good length. That might be very useful here. And we're hoping that Fahim Ashraf grows into this role and can provide us something with the bat and something really good with the ball. So we've got quite a lot of options, and hopefully we'll see what we bring out tomorrow, and that might reflect what we might go with in the test match. And speaking of Does that bring what sort of balance do you think you'll go with, and how close to the test 11 do you think it will look tomorrow? I think you're spot on with it being a 4-day first-class fixture. We'd like to manage some loads as well, so it might be possible that we rest a couple of players that we feel have worked a lot in the recent past. But look, we've got 18 players. We've got 7 fast bowlers. Probably gives us an ideal opportunity to test which combination we might be taking with us to Perth, and it'll be a great test for the batsmen. Having probably 2 innings in these 4 days would be a good test against a very good attack. Again, we'll just try and get the best preparation out of it. As a batsman coming to Australia, what are the biggest adjustments you have to make, particularly when you're starting a series in somewhere like Perth? Pace and bounce, obviously. That's something that's a given in Australia. We've been very fortunate that a lot of the guys were part of the 2019 tour. Some even came during the 2016 tour, which is sort of a replica of this series in terms of the fixture list, except Perth and Brisbane being switched. We were lucky to play the T20 World Cup last year. I felt as a batsman those were testing conditions, but
we still did a decent job as a batting unit there. So there are a lot of the guys who've gotten that experience, and it's the pace and bounce in Australia and their pace attack, along with Nathan Lyon, that you want to get used to and you want to put under pressure right from the word go, because they've dominated world cricket for a while. It's going to be an emotional series for him. He's been a great servant to world cricket, not just Australian cricket. We wish him all the best with whatever he chooses to do. He's been a great ambassador to the game. For us, he's one of their main players, and we'd like to get him out as early as possible, as said by the guys on the previous days. So we wish him all the best, but hopefully we can provide him with a challenging series. Shan, with this I haven't seen any drama personally. I think we're very well focused on the job that's on our hands. We've got here. Excuse me, sorry. We've got here. We've had a couple of days of rest, and we've been straight into practice. We've done some fitness work. For us, it's about what's in our control, in our preparation, when we know that we're going up against the World Test champions in their own backyard. It's going to be a challenging series, but it's an exciting opportunity for all of us to put our skills in under test and obviously take some points into our World Test Championship for this cycle as well. Are you expecting that? You guys all good there at the back? Zach, please. Kelly, you good? I'm good. Are you filming there? You good, mate? Got a couple of days here now. What have you made of Monaco Oval and the pitch and Canberra? For us, it's mainly been jet lag, a bit of rain, but we've been lucky that we got a full day of practice yesterday. It's a beautiful place, a beautiful ground, and an ideal way to start our tour off, and we're looking really forward to it. When you are dealing with, I guess, the jet lag and things like that, how important is a game like this to just find your feet and, I guess, have a bit of a hit? I think it's very important, especially the nature of the game. It's a first-class fixture. We're playing against a side that's very well equipped. They've got a lot of Australian internationals, a lot of people knocking on that Australian door. So it's probably an ideal way for us to start against the World Test champions. Anyone in particular in this team that you're looking forward to testing yourself against? It's hard naming people, because I think, like I said, they've got quite a few internationals, but Cameron Green's one of them that's in the 14. He'd be someone to look out for. He's got all the potential to be a world-class all-rounder, and we're looking forward to coming up against the 11. It sounds like he might not do too much bowling this week. Is that nice to hear? That's not in our control. Obviously, we'd like to pace him. You wanna play the best. But again, the nature of this game, it's a competitive first-class fixture, and we're looking forward to it. What have you made